All right, let's open. The value of $20 is more than value. Yeah, first come to Saturday's seminar. Anybody Amin Qureshi Sahib. Tomorrow at 1 p.m. in person, Trinity Drive session. Today is what, April 4th. Let me go live. Today is a little bit behind because of the video. नहीं, मैं MES पे सिर्फ सिग्नल भेज रहा हूँ या MNQ पे. अगर आप ES वगैरह कुछ कर रहे हैं तो फिर मेरा टेक ओवर कर देगा. इससे बेहतर ये अगर आप ट्रेड में हैं तो वो बॉक्स अनचेक कर दें. नहीं, क्योंकि जैसे ही बॉक्स अनचेक हुआ है तो फिर तो सिग्नल नहीं आएगा, आना नहीं चाहिए. So again फिर अवॉइड करें कि दैट इंस्ट्रूमेंट पे या दैट अकाउंट पे ना ट्रेड करें, राइट? सो दैट्स अ Friday areas and daily NQ. Let's take a look at. Okay. We're finally seeing 17,000. Good morning, जी. सर वो आपके टैरिफ चाइना ने कर दिए. मैं चाइना ने कहा कि भाई दैट्स इट, नो मोर आपने टैरिफ लगाने हैं. पेस डाउन, प्रेशर अप, स्ट्राइक प्राइस 90. ये 17,000 को तो नंबर नजर आना शुरू हो गया. 19 नहीं अभी नहीं इतना बुरा हाल. आज हो जाएगा अगर इसी हिसाब से गिरी थी. All right, let's sorry, I'm slightly late, so let's start my opening first. All right, good morning everybody. Good morning, Friday, April 4th, 9:10 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are joining me at superareas.com. Again, extreme volatility because of now China. Last night I was up until 5 o'clock finishing the video. I've uploaded it. It's on YouTube. It's 2 hours. Every single type of trade there is that we do at Super Areas. You can look at the TP, SL, and then I did the retracement divergence trade insight. It's a 2-hour video. You can break it down. So I'm a little bit out of sync with the reality at the moment because of the
No sleep. All right, what did Nasdaq do last night? It fell as low as 17,820. 17,820, and that's the low. Where did it went as high as 18,715? 18,715, and you 895 points in a night. So wow, after opening. Where are we right now? 18,228. We are very close to our expected low is done, kind of, by the way. Went as low as 207. So it's expected low नहीं done हुआ जी अभी. Expected low नहीं done हुआ. Friday के आप reconnect करें, अभी तो S2 done हुआ है. S2 done हुआ है. वो एरिया अभी expected low नहीं आया. Expected low तो आपका 18,000 पे. Sorry, where am I looking at? 17,820 is हो गया expected low. 1 second. Did I copy the areas wrong? Where did it fall down to? कहाँ पर? नहीं वो तो है, लेकिन न्यूज के बाद गिरी है, क्योंकि एरिया तो बाद में आए हैं ना. एरिया लेकिन ऊपर डेट देखें कि ऊपर एरियाज के ऊपर डेट कौन सी लिखी हुई है. April 4th. Okay, let me. Nasdaq, पहले Nasdaq देखना. Okay. Let me double check the areas. What time? So after the news, it shot up. Okay. So we are in roughly 200. Even the gaps are so huge between S2. 730 नहीं गिन रहा एक से 18. So 18,000 is a good number, guys. For if you wanna take Nasdaq, 18,000. Wait for 18,000. You can redo expected low one more time because it shot up after the news. So 18,000 Nasdaq is okay. And then we have ES. ES is sitting at 5,300. 5,300. So how low did ES go? Let me restart my Ninja. It's not plotting it properly. So yeah, expected low is done. It happened before 9:30, so it got touched 1, 2, 3, 4. So the lowest it went is 5209, 5210. So we'll wait for extreme low, guys. Yes, you are right. 1, 2, both are 100% synced. नहीं अभी जाना है. अब हम extreme low लेंगे. So today for 17,000, but right now the price of Nasdaq is around 18,000. Give me 1 second. All right, cross is expected low, guys. Let's wait for extreme low. Let's wait only extreme low, nothing else.
Extreme low ES, extreme low Nasdaq. So we're not doing anything except extreme low, please. Extreme low, please. Because of the volatility and everything else, it is just insane. These numbers are coming in like, so 18, 7, 15, 2, and 17, 8, 20. And how is the news for non-farm? Let's look at news is green. So more jobs got added. So the news is good. Unemployment went up, but the news went, so news is green. So price shot up from expected or 11:25. We have Fed chair going to come in and speak all of it. So Nasdaq, please wait for the price to hit extreme low. Then we do everything. I'm going to highlight because of the non-farm. So wait for extreme low. Maybe 970, 820. Maybe night session low. So look at this volatility, crazy. So 17,600 is the number I'm going to go for Nasdaq, and I will be going for, what's the lowest it went? 55.10. 52.10, sorry, 52.10. 300 ES move हो रही है. So 51.90, 51.90 for ES, guys. That's the number we're gonna work with, and let's see along the lines. सर मुझे नहीं मालूम, अभी तो मैंने जब भेजूंगा तो पता लगेगा कि क्या हो रहा है. वो तो बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाते हैं ना, कंप्यूटर ऑन होता है तो. And our internet is crapping out as usual. Ping rate is so high. Okay. So 51.90 for ES and Nasdaq futures 17,600. And just wanted to give you a quick update for those who joined in late. If you go on our YouTube channel, I've uploaded the video for last night. Explains all the step by step on all 14 type of trades. What is an optimal stop loss, and also your what do you call it? Retracement divergence. How to take bottom of the bar, top of the bar. How to take a breakout trade with an OCO. Everything I packed in one single take, right? So we'll see how it goes. So we are live now on Zoom and everywhere else. Okay, 5304. $5,300. So right now price is between S2 and S3 at the moment. 52.10.
दूसरे नहीं कर रहे वो भी प्राइस है वो भी सुपर है नहीं All right. Let's do this. Let's do this. All right, let's look at 6 more minutes and then I will send a test signal on MNQ and MES on your things. तो अमन के लिए दोबारा चार्ट खोलना पड़ेगा जैसे कल खोले हाँ वो तो सारा करना पड़ेगा ना वहां पर सिग्नल भेजूंगा ना सो
एक लॉट देगा तो मैं एक लॉट शॉर्ट गिरेगी कितना होता है एक लॉट देगा 1000 दे दो एक लॉट मैं 10 से लॉन्ग किया हुआ है और 20 से शॉर्ट किया हुआ है एक लॉट बोलो एक लॉट 20 है इसका नहीं सब 50 है ये All right, let me know if anybody got a signal on MNQ right now. I sent it. On your area chart, it should be in 17,800. Everybody got it, and we got it here too on our area chart. Now I'm sending on a signal on ES at extreme low area, MES, and buy limit. There you go. ES got placed too. So ES got placed on SIM, wherever, whichever account you're watching, whichever the two test trades got sent in. They can MES में देखें SIM पे हो, right account में हो, chart पे हो, क्योंकि अगर एक गया है तो दूसरा भी आपका ऑटो जाना चाहिए. सर आप मुझे फ्लो बॉट की पिक्चर भेजें और अपने एरिया चार्ट की फोटो भेजें कि और चार्ट ट्रेडर ऑन के साथ. So first signal got sent in. Sent area trades signal MNQ MES. So one order I sent in is on your MES 519175 and the second 17,825. So this is the signal I sent in. But market is opening in 2 minutes. Let's do it. MNQ ठीक है. आपने देखें आप वॉच सिम में कर रही हैं और सिम लगाया नहीं हुआ. देखें फिर वहां पर आपका ऑर्डर गया होगा जिस अकाउंट में आपने लगाए हुए हैं ना. तो MES में मुझे फ्लो बॉट की फोटो भेजें. अपने व्हाट्सएप पे फ्लो बॉट की फोटो देखता हूँ. एक MNQ ठीक है, MES ठीक है, फ्लो बॉट आपको दोबारा देखता हूँ. WJSL. So why didn't your नहीं हमने इसीलिए 30-20 पे ना देखें, एरिया चार्ट के ऊपर देखें, वरना वो चार्ट कंप्रेस कर देगा. राइट. तो अगर आपने वहां नहीं देखना तो वहां का चार्ट ट्रेडर ऑफ कर दे तो वो फिर आपका सही हो जाएगा. जो चार्ट कंप्रेस हो जाता है उसको एरिया चार्ट, क्योंकि मैं एरिया भेज रहा हूँ ना आज क्योंकि जितनी वॉलेटिलिटी है मैं सिर्फ एरिया भेजूंगा. मैं आपका देखता हूँ. एक सेकंड जी, मुझे अभी देखता हूँ. आपके क्यों नहीं आया? मुझे फ्लो बॉट की फोटो भेजे, फ्लो बॉट वाली स्क्रीन की. हाँ, मैं 5 बाय इधर लगाया है और आपका MES जून सिम फ्लो बॉट. एक सेकेंड, आपका फ्लो बॉट ठीक है जी. अनचेक सिम WJ6L. Let's look at this. What's going on? WJ6L online L9S2.
All right, market is officially open. We'll see how. Okay, I'll resend it one more time. I'll cancel the orders. That's cancelled. आपका MNQ की नहीं आया था ये MES? MNQ का आ गया था। तो आपने MES की विंडो ही नहीं खोली हुई। तो देखिए फ्लो बोर्ड में सिर्फ मुझे शो कर रहा है MNQ, MES तो शो ही नहीं कर रहा ना। अच्छा, उसकी कॉपी करनी है। उसकी कॉपी करके उसको एक दफा वर्क स्पेस सेव कर लेना। All right, so I'm about to send it. So just save your templates. Oh, this is too fast for even ES. You see how crazy this is right now? So I'm sending a signal in right now, 5192 buy limit on MES. I'm sending a signal now on 77, maybe slightly lower than. So I've sent two signals, one more. So if they showed up here, आ गए ना, तो बेसिकली नहीं है, अभी है। हाँ अब देखते हैं सिर्फ, क्योंकि ये सेटिंग्स ना सेव कर लें एक दफा। नहीं बैठे बैठे इट्स ओके। और यहाँ चार्ट ट्रेडर पे ना रखें, क्योंकि मैं यहाँ चार्ट ट्रेडर से नहीं भेज रहा, क्योंकि आज एरिया में कर रहा हूँ, आपके चार्ट स्क्वीज हो जाएंगे। सो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके MNQ में देखिए इसका चार्ट ट्रेडर ऑन करना है। आपका अकाउंट नहीं सिलेक्टेड, वो देखिए आया है। So keep the chart trader on. These volatility only areas. No. If I find something in between, I'll do. But now everybody should have that signal on MNQ and MES. All right. Even ES, how can you touch this mid band? 30-20 बैठ जाएं, देखें टॉप ऑफ द बार दे दिया उसने आपको, या रिजेक्शन वेग जो भी है। तो हम हाँ, अब आपके दोनों आ गए। नहीं फिर आपके रेशियो नहीं उधर सेट। नहीं वो जब गया था ना ऑर्डर, उस वक्त रेशियो। नो प्रॉब्लम। All right, I'm canceling this right now. We'll see when it's actually, we'll observe, watch and observe. Even though news is good, but market tariffs are just ridiculous. It is. Anybody just hits sell these days, it's foreign bun raha hai. मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि उस वक्त अगर कहीं उससे पहले अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आई तो मैं ले लूंगा। वो ये कह रहा है आपको नीचे अकाउंट सेलेक्ट करना है ना, कोई आप अकाउंट ही नहीं सेलेक्ट कर रहे, ये मसला है। Stocks are getting brutalized. Tesla down to 255. Nvidia almost at
Nvidia down to $98. Ridiculous. From 140. Microsoft down, ES down. It is amazing. Apple down, Microsoft down, Nvidia down, Amazon down. Because these tariffs are going to kill end of capitalism as we speak it. This is not the world where you can just come on the mic and say something and users will behave. As price is hitting almost expected low on both zones, very close. Just for those who are looking at expected low, we're almost in expected low after the market open. So, हैं? क्या कह रहा है? नहीं उस पे बॉक्स पे क्लिक करें ना अकाउंट के अंदर। अच्छा अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करें, यहाँ के वाईफाई से नहीं, क्योंकि वो इतने ज्यादा लोग कनेक्ट करते हैं। तो 17,000 2,200 points. We're back almost very close to expected low. So that's the current session low. One more time touching expected low, but not Nasdaq. Yes. Let's see. Anybody wants to take their own trade? More than welcome. More than welcome. Not me. नॉन फॉर्म है, कैसे हाथ डालेंगे? कहाँ से एंटर करेंगे? आधे से ज्यादा सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। स्पीड देखें, back into expected low and going down because Nasdaq wants to touch. There you go. So 18,000 number. Even gold is moving fast. 18,000 minus 17,819. That's 181 points from here.
Power से मुझे आ रही है. Yeah, I may jump in if this is a 30-20 divergence. I may jump in on MES, but no, it's too, strength is coming down. Not yet. अभी नहीं सर. Very close to night session low. 52.10. Expected low भी गया जी. हाँ हाँ वो हमारा नंबर है. Pure sell off. I need a higher low somewhere, guys. I need a higher low. Nasdaq touched expected low and bounced back up. So Nasdaq area is officially done after the morning session. So it touched almost 18,000 and 18,005 and shot back up. Back into expected low and hammering down fast. कहाँ से enter कर? Too fast, man. नहीं आप एंट्री क्यों हो रहे हैं इतने? नहीं, मैं कह रहा हूँ it's too hot right now. Not touching nothing. क्या नहीं हो रहा? Trader weight? नहीं hotspot. So trader weight में log in करें hotspot के साथ right away. It is. So hotspots are number one. No, just right click inside and cancel positions. Yes, that will kill it. So it means कि nothing, कुछ नहीं चल रहा.
तो मार्केट It's like China ने बम फेंक दिया यूएस इकोनॉमी पे तो पैनिक हो गया था हाँ मेरी कॉलोनी की नहीं है वो एक रात में हो गई वाइफ के पैसे होगा तो उसने एआई से पूछा चेक करो मेटल्स पे चेक करो जैकेटों में चेक करो निकाल दे बुक्स के अंदर चेक
तो लेकिन जो आपका सेमिनार होता है ना, तो लोग जो आपको फोन से होते हैं, हमसे तो हम किस तरह सवाल करेंगे, वो वीडियो देख सकते हैं। व्हाट्सएप मेरे नंबर व्हाट्सएप आपको अलबर्टा से मैसेज किया था। हाँ व्हाट्सएप, क्योंकि मुझे 2-3 आए हैं, तो व्हाट्सएप बंदा क्या एरिया टू एरिया खेले यहाँ पर। खामोश, there's no rush. I don't want to just jump in and then gamble until I am sure what is going on. इसमें हजारों रिजेक्शन विक्स आ रही हैं, हजारों, लाइक मैं सोचता हूँ यहाँ से बाय बिड दबा दूंगा, उससे पहले वो प्राइस निकल जाती है. Because buy bid is like a buy market, right? And buy sell bid and the sell market. So as close to the चलती गाड़ी में बैठना हो तो buy bid दबा दें तो लिमिट ऑर्डर ही लगता है एक तक पीछे. It's okay. It will slow down. We will figure out an entry, but it is too volatile right now. Okay, what could happen is instantly some orders could get disconnected and then like it's testing expected. We are located in Toronto, Ontario, Canada. So superareas.com website is there. Anybody can come in. Tomorrow we have a seminar at 1 p.m. Trinity Drive, 1575. For those who don't know this software, they're welcome to join. It's a 5-hour seminar from 1 p.m. to 6 p.m. This is for new users who have no idea. No, new as in who hasn't even signed up. Or what is about trading? No problem. You're welcome to. Who is the teacher? We have 13 mentors, so I'll be doing the presentation. There's no one teacher here. It's an organization. I put it up as 12,000 members since 2008. We have 4 data analysts, 15 employees, 2 offices. So all the details are at superareas.com. If our Starlink works there, I'll do an online stream because of the snow, we had to move. Plus, I don't know if Doug Ford canceled my Starlink. So from Elon, you see how fast it can change. It's learn to trade futures. Gold is at all-time high, guys. Almost 3,200 very soon, maybe. सर आज किसी का हाथ नहीं पड़ रहा हाथ डालने का. बड़े से बड़ा ट्रेडर भी बाहर बैठा है कि लॉन्ग गए शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट. तो हम अगर एरिया ये आता ना S2 तक तो मैं भी एक्सपेक्टेड लो लगा था, लेकिन क्योंकि अगर आप देखें 3 दफा एक्सपेक्टेड लो टेस्ट हो चुका है. आई डोंट वांट टू मैं क्योंकि 4th टाइम हम एंटर हो वो ले जाए. So it's better to preserve our account because there is always tomorrow. It's not the end of the world. Yes, it's an end of US capitalism, but because right now it's a 50-50 bet. I place an order, it picks me in, I don't know where it's gonna go, right? So I rather do this properly than area trade. So if the price goes at 51.90, that's where I'll place an order. So, and I'll place an order right now. I'll sell in
So everybody thinks that I'm doing something, right? So I will go at 51.90.50 and I have placed an order. Good. Everybody got a signal. Just say, there you go. I've sent the signal to you guys. It's at 51. Yeah, my presence is there. So I'm waiting for the price to go to 51.90 before I buy. I'm not buying any earlier than that. Say one click and then boom. कहाँ से mid band पकड़ेंगे जी आप? So just to give you a credibility of topic, since nothing is happening, I spoke to Daniel yesterday, and Daniel says 18 years since 2008. And I said there's been 3 days when the market fell like this: COVID, 9/11, and yesterday, where the just. And yesterday I took a picture of what our software predicted to the dot. Extreme low when I was driving, and I saw the price came to extreme low, and I hit buy at 50. And in about 2 minutes, it went to 57, and I was done. So, I mean, even the world's most difficult day, our software prediction came out to. So, I never say 100%, but so now that's why I'm waiting for everything on the table is not available. Only thing available for me right now is this number, extreme low. So if you look at your area chart, this is what China did to us, to the US market. This is volatility of your ADP, the non-farm. So this area is invalid. So we are waiting at 51.90.50. Just खामोशी से बैठे हैं. यहाँ आएगी प्राइस, ना आई तो अकाउंट से पैसे तो नहीं जा रहे ना. लोग सिर्फ ये कई दफा समझते हैं भाई आज ट्रेड नहीं हुआ, इसका मतलब है कि पता नहीं क्या हो गया. इट्स ओके. यस्टरडे मैं यहाँ बैठा था 76 पे, मेरा ऑर्डर ही नहीं पिक हुआ, सारों का हो गया. इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. सो it diligently is, if you want to wait for 17,600, sure, put an MNQ right here. So these, why this chart is important, because in a market like today, look, mid-band, you can't even press a button. It is not possible. Even a 30-20 chart is, this is normally how Nasdaq moves, normally. And look how, and you can say, oh, great, but how will you place an order? Like, it can't even refresh fast enough, right? So best is just sit out and wait until the market kind of slows down. This is called a doji, meaning from top to bottom, you have no body of this 1 hour candle, 30-minute candle. हाँ, फिर वहां पर, क्योंकि अगर तो ये रेड खुली तो मुझे ये नंबर चाहिए 51.90 से पहले मुझे नहीं खरीदना. Yeah, that's fine. So वहाँ एरो आ जाते हैं दूसरे आपके charts पे. But for me, my area trade is set 51.80 to 51.80. There you go. Next candle opening below, and it's in red. 30-minute candle just open. हाँ जी. हाँ जी. हाँ. कौन से एरिया से लॉन्ग कर दिया जाए कि वो 10 से 15. सर देखें, अब प्रॉब्लम ये है कि वो नई से नई लो रोज बना रहा है. कल उसने, क्योंकि ये अनसर्टेन टाइम है ना, तो आपको फिर अगर ऐसा लॉट लें कि अगर वो अनदर 1000 पॉइंट ले सके, तो 10 लॉट नहीं 10 लॉट, अगर अपना अकाउंट साइज क्या है, मेरा 2 लाख का है, आई हैव 193,000. ठीक है, 7000 पड़ा है ना, 13,000. अब 13,000 को आप देखें कि अगर दो यहाँ से 1000 पॉइंट गिरती है, क्या आपका अकाउंट सह जाएगा? 10 लाख ठीक है, फिर ये वाला नंबर ले लें, क्योंकि अभी बैक टू बैक 3 दिन से गिर रही है, राइट? तो 70, you know, when he left, he said a number 17,000. So if you want to wait till 17,000, you can, because it's only 600 points left, and these numbers are very close to 5,000. So look,
Some users will do 5,000, some users will do 17,000 for long term. फिर आप बैठे हैं 3 माह नहीं ठीक तो इसको so 17,000 if you want to be FTMO and we can give another 600 points margin, see if it can fall. So 17,000 is a good number, I think. हाँ निकल जाएगा yes. लेकिन प्रॉब्लम है जिसने कल के एक्सट्रीम से किया था वहां से 600 पॉइंट गिर चुकी है तो अब हमें ये नहीं पता ना कि 17,600 से 600 और गिरे तो आप ज्यादा लॉट का रिस्क नहीं ले सकते because still on any of the bigger charts I don't have a higher low like if you like जब तक जिस तरह हम यहाँ कहते हैं डायरेक्शन कब चेंज होगी वो अभी तक लोअर लो ही बना रहा है ना like 240 लोअर लो बना रहा है 60 मिनट लो वहां पर हायर लो आ ही नहीं रहा जब तक हायर लो नहीं है मैं कैसे ऊपर ले लूं the first higher low on my 60 minute at least on 240 chart will be my first indication that I'm going long term up so take a look at your 240 chart lower low ye so in a bigger time frame if you what is our rule swing retrace right now it's a huge swing coming to lower low and I think your number is almost 17,800. That's the lowest. That's a 2,200 point drop. So we are waiting. First of all, it should make it 60 minute में कोई higher low नजर आ रहा है 60 minute के चक्कर क्योंकि हमने उस तरह narrow करना है ना. So first we'll check if there is a higher low on 60 minute. Then we'll check if there is a higher low on and then 140. This will be the last higher low in the daily chart. See, lower low है ना देखिए हमने कहाँ से buy करते हैं SRES में that if this is the low right it makes a low it will go up and make a lower high right after that if we have a black candle of higher low that's the number I'm interested in this is the number you can say all right I will take from top of that so just like we are doing so because what happens if this is a lower low tomorrow 17,000 could be my lower low then you will wake up again and it could be 15,000 and then you really are in a panic mode worldwide if Nasdaq loses that much. Smart people with a lot of money, I know a lot of guys, they're buying right now. This is where the market dumps. They will invest for a long time because this is cheap stock. Nvidia $98. $98 today, you know. So for those guys who have the opportunity, they're now going to be taking a stock because eventually this will correct itself. Maybe 3 months, 4 months, 6 months. Like 22,000 was the number around February. Right now, it is 17,500. 22,450 हमने देखा है. तो देखिए ना 5,000 point as that गिर चुकी है. इस 5,000 point यार, this is crazy. And by the way, all of our, if the market crashes in a certain or goes up 7% in a day, they halt trading globally. Because they don't want. And some stocks I saw yesterday were down. Nike was down 18%. Why? Factory in Nike is going to make a shoe for $200. And now you have tariffs. So now here's the Trump says we'll make shoes in Nike. Who's going to work for $3 an hour to work for US Nike, right? In China, you can exploit the labor and do like $3 an hour is the Nike average factory worker mix. And they take that shoe and they sell it for $2.99. Huge margins. So right now, only guys are suffering are American companies. Their margins have started to like 10, right? So look at, like, for example, you buy a shoe, you buy anything, Apple Watch. Why Apple is dropping? All of the contracts are in Vietnam, in China, in Thailand, and now they have tariffs on those that. So it is. What is VWAP? Hey? VWAP. मैं देखता हूँ. वैल्यू एरिया का तो नहीं है. ऐसे कह रहा है कि इस वक्त जब आप एंट्री बाय की बनती है 1 tick above the resistance level. It's a volume weighted average. So just like we have a moving average, so volume based. So problem is all these AIs are looking at traditional. हाँ हाँ देखें अब हमें ये नहीं.
नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एनवीडिया 86 पे आएगा, उसकी क्या गारंटी? हाँ, फिर एक चीज पिक करें ना, एनवीडिया पिक करें, मेटा पिक करें, एक एक स्टॉक पिक करें, क्योंकि एफटीएमओ अलाउस। वी आर बैक इन एक्सपेक्टेड लो। NVIDIA is 96. ये तो सर 200-400 पे बैठा हुआ या 470 पे बैठा हुआ नहीं 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 नहीं, उस नहीं नहीं 140 पे, एनवीडिया 140 से आया नीचे। टेस्ला हाँ उसमें तो गया था 249. This is why we call, don't get into politics if you don't know. In the US history, the first lady, or AKA Elon Musk, right? Finally, I call him the first lady because she's maybe he went with Trump more in bed than his own wife. This is this is how the reality is. Like, is it possible that you can have a US president sitting and Elon Musk standing with a kid on his? This is not normal, right? Even from any standards. So if he's saying to Ukraine guy, you didn't wear a suit, you know. Euro US 1.100 So we sit and wait. Don't need to think about getting into profession. मैंने सुबह से एक ही ट्रेडिंग किया है, at least not in my program. We're still in expected low. All right, let's see. We're below expected low, so we're waiting again towards 5190 zone. Let's see.
52.36. Very close coming to night session. 20 more points. अब तो हर चीज ही हो गई पॉसिबल पहले ये नहीं सोचा था कि 6000 दिखेगा, फिर ये कभी नहीं सोचा था कि ये नंबर दिखेगा। सर ये नंबर मैं टिकटॉक से बैठा देख रहा हूँ कि मैंने 3 साल से कर रहा हूँ ना, कब आए हैं ये? April of 2024. Wow, a year. 2 days can put us back a year. 2 days. April 2024. Market यहाँ कहीं 2024. एक साल बाद 24 से exactly it's come back to the point that was a year ago. 4631 बार नीचे नहीं highest. Almost 5,000 ही समझ. तो दूर कर आया पहले को खत्म हो गया क्या $10 दिखेगा. 0 trades for me so far. 0. What am I supposed to click? So I have clicked already 51.90. That's it. If it falls below 51.80 or below, I'll get out. That's my stop loss. That's it. See, it's so tempting right now to hit a buy. You're like, man, it has fallen so much. I need to buy. But what is the next low? That's the problem. And the person says, oh, I should have clicked buy and look, the market went up. But, true buy is at 51.90. And Nasdaq is really at the bottom range of too hot. Now it's heading in the bottom range of Nasdaq, expected low, bottom range.
So let's wait for the. Sorry, I had to disconnect the live. It's just some guy. Their AI picked up that hey, I was doing something. So yeah, it disconnected me from TikTok. It's like, what are you talking about? Right. So I just submitted an appeal that hey, we're just talking futures and nothing else. Right? So all right. We have a higher low on 1510, but no, not 3020 yet. There you go, 1510 higher low SRES. How fast it moves. Can't keep up. It's too fast. Sorry, I'm doing too many things right now. It is. Take pro. करने के लिए एक अकाउंट को दो लोन खोल के मैं माइक्रो में और मिनिमल हो सकते हैं हाँ मतलब कि हमने तो जीरो पे खड़ा रहेगा ना हाँ कर सकते हैं हैज एक ही अकाउंट मतलब तो हमने 4 लगा दिया तो हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया 40 माइक्रो करेक्ट यू सेव वन अकाउंट लेकिन ओसीओ बेटर है तो मार्केट एकदम से हाँ लेकिन वो एक साइड पे तो गई ना तो आपको तो 20 पॉइंट चाहिए 4 लाख पे पास करने के लिए तो ओसीओ उधर ओसीओ में एक अकाउंट करे ना वो बल्कि रिस्क कम था वो तो हेज में तो 2 अकाउंट चाहिए ओसीओ में एक अकाउंट चाहिए क्योंकि अगर इधर की तरफ गई तो उधर ले जाएगी तो Sorry, I thought you have an account. Why did I press cancel? Doesn't.
कोई बात मैं भी आपके साथ जीरो ट्रेड बैठा हूँ ये कंप्लीट एबनॉर्मल एक्टिविटी है अब लगता है ट्रू जंग नहीं हो रही बाहर विदाउट एनी मिसाइल्स विदाउट एनीथिंग ट्रू जंग हो रही है लाइक आपके शुक्र है उसने कनाडा को स्पेयर कर दिया क्योंकि फिर हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री खत्म हो है नहीं लेकिन वो जो अभी नए लगने थे ना वो होल्ड ऑफ हो गए ना I know time is running out, but if by 4 p.m. this happens, please don't do this. It's a Friday. If they close low, they may not have a chance to go back up. So just saying that's why Daniel for 18 years used to close this office on Friday. He doesn't want people to trade it after 11. Because what will happen is price will go to let's say 51.90 and it's 4 o'clock, and then you're hoping, hey, is it gonna bounce? Because it's not opening until Sunday at 6, things could change, right? So we're trying to hopefully get this wave before 11:25. Why 11:25? FOMC Mother News is going to start. If you look at your forex factory, they're gonna start speaking, and then this volatility again will start. So it's okay. So it's better to sit at a borderlines and not do any stupid mistake. Because we want to take one entry and right entry. Oh, सर वो 100 दफा मैंने मिस किया मैं एक दफा तो बाय बिड पे ना रह गया मैं कहा यार लेकिन जब मुझे डाउट आ जाए ना मैं नहीं पीछे 150 बंदा बांधा हुआ मैंने तो गलत हो गया तो बहुत किसी ने 5 लगाए हैं किसी ने क्रॉस किया हुआ मुझे क्या पता मुझे तो सिम का पता है तो मैं बहुत ध्यान से मैंने ये काम करना है इस वजह से हाँ ना एरिया डन मीन्स के उस एरिया में दोबारा नहीं जाना क्योंकि एक्सपेक्टेड लो 6-8 दफा हुआ और फिर वो तोड़ गया अब देखिए ना एक्सपेक्टेड लो से नीचे घूम रही है प्राइस इस वक्त राइट दोनों में वो तो तो जब एरिया डन का मतलब ये हो जाता है जब आप आए मुझे आपने देखा होगा सो फर्स्ट थिंग आई सेड इज वी आर नॉट टेकिंग एक्सपेक्टेड लो even though it bounced second or third time and gave us a few points, I'm not comfortable. Because I've heard Daniel say for 4 years in my head, areas are valid until they hit or for 24 hours. The only thing on the table for me, if I see is nothing hit, is extreme low. So I'm waiting and waiting and waiting. Yesterday, you know what time extreme low came? Around after 4 o'clock. 3:30 or so, I took the extreme low and then I took the extreme low bottom range. I think we were playing at 56 yesterday. कल का क्या था यार बल्कि थर्सडे नजर ही आ जाता है. What was the area for yesterday? Monday to Friday. Yeah, we were at 54.42 and today we are at 51. 51. Like, come on, man. 300 point ES का गिरना so yesterday's area was 54.42 minus 51.90 250 point ES हाँ हाँ अच्छा सिम ऑन रह गया था तो मुझे पता नहीं तो बंद कैसे करना है तब मुझे पता ही चल रहा था क्या करना है तभी आपसे मैसेज किया करें कॉल नहीं फोन होती इस पे नंबर पे फोन नहीं कॉल होती व्हाट्सएप नहीं आई नो ट्रेडर वेट में जाके उसको सिर्फ देखिए आपके ऑर्डर ना लगे वो अगर येलो हो जाए ना अगर येलो लाइन फिर डिस्कनेक्ट करें सही हो जाता है अगर येलो का कोई मसला नहीं है येलो इज नॉट एन एक्चुअल ऑर्डर बट वो ऑन रह गया आप में ऑन कराया नो वरीज एब्सोल्युटली sell bid and buy bid is
just market orders. That's it. As instead of hitting market, all right, 28. So we're very close, guys. Only 30, 40 points to go to our extreme low. थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, थोड़ा सा जो है ना लग गया यार कि ठहराव आ गया तूफान में. So $95 Nvidia. My God, man, Nvidia is gone. Tesla 243. Tesla is lost $800 billion in $800 billion Tesla wiped out. Just one company. जितना टेस्ला ने बनाया था ना उससे ज्यादा वापस कर रहा. Yes, hi. Hello? Yes, speaking. All right, thank you. I'll pick it up tonight. Thank you. Bye. Yes, sir. तो लूज नहीं 1200 ठीक है ਤੁਹਾਡਾ 1500 मैक्सिमम ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 3000 ਬਣਾਣੇ ਨਾ ਅਗਰ 1200 ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਜੈਂਡ ਦਾ 600 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ 1500 ਹੈ ਅਗਰ ਲੈਜੈਂਡਸ ਬਣ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਲੈਜੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜੈਂਡ ਤੇ 10 ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਜੈਂਡ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੇ ਟੇਕ 1200 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਰੰਕ ਤੇ ਚ ਰੱਖ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਲੈਪਟਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਟਸ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰ ਦਵਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਓਗੇ ਚਾਰਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਸਮ ਖਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ 1500 ਜੀ ਹੈ ये स्पॉट प्राइस है ये रियल नहीं है वो फ्यूचर है तो ठीक है सर ओके लेकिन ਉੱਥੇ ਲੈਜੈਂਡ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣੇ ਮੈਨੂੰ ਐਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦੀਆ ਵੀ ਲਾ ਦਵਾਂ $5 ਰਹਿ ਗਏ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ $15 ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰੀ ਹੈ Night session low coming, yes. Anybody who is watching, almost 8 points to go to night session low. Like 58.10, guys. Is our night session. So we are waiting at 51.90.
नहीं नहीं हुण होर 300 ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 11:25 ਤੇ FOMC ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੈਗਰਾ ਫਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨੈਸਲੇ ਦੀ ਬੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਨਾ ਬੋਤਲ ਵੀ ਸਿੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 1200 ਬਣ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ठीक है विश के डिवाइस होवे एक ब्लूटूथ अगो ना को सुन मारे के हो गया एक्सेप्ट करो जी 7 points to go 14 तक चली गई थी यार 14 तक चली and Nasdaq has gone below 13 कोई बात 12 13 13 13 12 25 there you go 11 10 we have broken the night session low we are as close to we that's your double सारे इतना ही करते हैं और कितना यार ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਲ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਕੱਢ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਨੈਸਡੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਟ੍ਰਿਗਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ठीक है मैं इधर चेक कर रहा हूँ लेजेंड्स डबल चेक करना है one more time trying to test night session low so 5190 guys be ready we're all ready but ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰਸ ਟੇਕ ਲੈਜੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਵੇਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਓਵਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਡ ਓਵਰ ਚੱਲ ਇੰਨੀ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ oh lekin all right guys we are very close to our area let's see 5190 नहीं ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ नहीं ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੈਨਸਲ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕੈਨਸਲ ਆਰਡਰਸ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਤੇ ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਉਹ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਕੈਨਸਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ तो एरर मिलता है 5200 कमान यार यहाँ से 10 पॉइंट पे भाग ना जाए ए देखो ए हूँ डिस्कनेक्ट हो गया विदाउट एरर ਇਹਦਾ मतलब कोई ऑर्डर नहीं पहले थोड़ा पर डे चेक करिए very close come on 10 पॉइंट से रह गए लेकिन अभी भी मैं देखता है सर सिर्फ जाकर डिस्कनेक्ट करें नहीं वो खुद ही डीएक्टिवेट हो जाता है नहीं रिमूव कॉन्फ़िगर में जाएं रिमूव कर दें नहीं ए वाला पर दिया तो नहीं रह सकता ए वाला नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ हाँ हाँ वो चला गया ना देखो डिस्टेंस डॉट नो नहीं दूसरा वाला देखते हैं ਤੁਹਾਡਾ वाला वो किधर नहीं सर 5190 पे पड़ा है मेरा ऑर्डर हाँ जी सुन रहे हैं एक सेकंड हाँ यार ठीक है पूरा है 37 वाला 37 पड़ गया प्रो चलो ठीक है मैंने अभी ऑर्डर काटा है दोबारा करीब नहीं मैंने ऑर्डर डिस्कनेक्ट किया है वही वाला सिर्फ उसके करीब आएगी तो फिर देखते हैं कि कहाँ से क्योंकि वहां मैं जॉइन बिड कर लूंगा अराउंड दैट एरिया क्योंकि लास्ट टाइम ये चली गई है ऑलमोस्ट 10 पॉइंट के गैप से राइट सो एक सेकंड सर 600 क्योंकि अगर गिरी तो बहुत बुरी गिरेगी पहले 820 तोड़े ना फिर डिसाइड करेंगे क्योंकि 700 820 पिछला नाइट लो है गैप बहुत बड़ा है क्योंकि एक माइक्रो अगर गिर गया ना सर पिछले 200 पॉइंट पे है 820 तो 600 तक 200 पॉइंट है ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ $400 ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰ क्योंकि पर डे मैंने पता है ला रहे होते वेट करो नहीं मैंने अभी रोका हुआ है क्योंकि वो ना 5200 से बाउंस किया ना अभी दोबारा उधर आ रही है तो करीब आई तो मैं जॉइन बिड कर लूंगा उसके करीब देखता हूँ कि एरिया के अंदर आती है कि नहीं लेकिन लेट्स सी आई विल पुट बैक इन बट समवेयर
let's say slightly in. ठीक है सर, ਤੁਹਾਡਾ रेडी हो गया, ठीक है, हम पर डे कर सकते, पर डे हम ट्रेड कर सकते। हाँ जी, हाँ जी, करो। और सर वो एक्सचेंज ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਤੇ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ, हाँ जी, कर लो जी, वो मैं चेक करना है ट्रेड ऑफ इट। प्लीज वो वीडियो जरूर देख लेना जी मैं राती पाई है। देखे ना अगेन उसने 52 को बनाया लेकिन वी आर स्टिल, आई एम नॉट मूविंग माय टारगेट। यू नो समटाइम आप बंदा होता है यार चलती गाड़ी में बैठ जाएं, यहाँ पर आपकी ग्रीड ने आपको रोकना है कि यार ये ग्रीड और डिसिप्लिन है। अगर 90 लिखा है ना तो किसी रीजन से है, मैंने खाली आसमान से 90 नहीं उठा के ला के लिख दिया, राइट। तो वो जो 90 कंप्यूटर ने दिया एक रीजन से दिया, आपने यहां से गए और वो जो 90 का सफर है वो आपका हार्ड पैनिक हो रहा होगा। अगर बोर्ड मिस हो गई नो प्रॉब्लम, हमने 90, लेकिन 90 अगर है तो कोई रीजन है कि, और अगर उन्होंने 600 लिखा है कंप्यूटर ने 17,600 पीछे को हिस्टोरिकल डेटा 18 साल का है हमारे पास, कोई रीजन से लिखा है। तो अगर आपको ओ माय गॉड आई मिस द बोर्ड, यस्टरडे हमने एक दो टिक से भी किया हुआ है, सो डोंट वरी, बट दिस इज टू क्लोज ऑफ ए गैप 5200, राइट। अब जिन लोगों ने एक्सपेक्टेड हाई लिया था वो तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे ना प्राइस एक्सट्रीम लो पे फिर रही है, एक्सपेक्टेड लो, सॉरी, राइट। सो there's a box, there's a reason. I will start taking my risk from inside extreme low, nothing else, right? So yes, some people will play aggressively, so कुछ लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक ले लें एक्सट्रीम लो पे एक और माइक्रो डाल दें, वो फिर दो, लेकिन अब मुझे नहीं पता ना कि अगर आप स्टार्ट ही 5 से कर रहे हैं, जब मैंने 2 किया तो आपके तो 10 हो जाएंगे, right? So I don't want to do any average in this NBT session whatsoever. I rather not trade, rather do average. I will, because average, let's say if I'm doing 1 and you have put in 5, देखिए यार राफे भाई अच्छा ट्रेड डाल रहे हैं, मुझे 5 मिल जाएंगे, ठीक है, नाजिम भाई 5 करते हैं, और अगर मुझे एवरेज करनी पड़ गई 2 पे तो इनके तो पूरा मिनी हो जाएगा। तो अब ये पैनिक में आ जाएंगे यार कि मैंने तो 5 का रिस्क लिया है। सो दिस सेशन of NBT April, I am not doing averaging, period. I will rather close the trade but not putting, yes, I do my own averaging lots of times. So like yesterday I was down on per dia, Bullnox. I was playing, yes, I was down $600, took another 5 micro, brought it up and then got out, right? So but I can't be risking on your averaging. So one of the rules says on the board, don't do an average in a position. ठीक है, ठीक, आपने 2 किए ना तो आपके 4 हो जाएंगे अगर मैंने कर दिए। सॉरी अशोक भाई, सॉरी। आ रहा जी, 52 तोड़ गया तो हमारा ऑर्डर आ गया जी, मैं रेडी हो रहा हूँ 97। तो आप लोगों को ऑर्डर अभी चला जाएगा 90 के अंदर, 90.25 पे मैंने बाय का ऑर्डर लगा दिया, आ गया जी आप लोगों को, ठीक है जी। So this is my order. I'm waiting. If it goes there, good. If it doesn't, too bad. But we're almost close. 93. Let's see. Extreme low. तो ਤੁਹਾਡਾ तो नहीं सही है ना इस वाले, हैवी नहीं ठीक, हैवी कैंसिल करना नहीं हुआ जी। हाँ जी, हाँ लेजेंड में, हाँ जी, हाँ जी, डन। And are we gonna get picked or not? Come on, pick me up now. इतना वेट किया है। All right, we got picked up. Let's see now if it's going to ruin us or not. Down 4 points, I'm holding. Nope, it's not stopping. Wait. At 75, I'm exiting, just telling you guys.
So 51.75, it's because Nasdaq still has lots of place to go to 80. Let's see, hopefully from here it can bounce from 80 zone. No, Nasdaq has broken all records. Looks like it's bouncing. 1510 has given us some green candles. So 78 आ गया, Nasdaq नहीं रुक रही. नहीं वो नहीं है, हो गया, वो नहीं है. यस यस, हाँ नहीं, वो ऑटो कैंसिल हो जाना. ओके ओके, वो मैं शामी कर देना, नो प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू. Why gold is falling? $75, guys. I am down quite a bit, so for me, I'm exiting this trade on SIM. Sorry, 70, maybe up to 70 we can hold, but this is getting a little too ridiculous. Then did not stop. नहीं अभी नहीं, मैं अभी तो एंटर ही हूँ, लेकिन इसका कहीं ना कहीं तो रोकना है ना. 72 आ गया है, 90 से एंटर है, 20 पॉइंट ले गया. So one lot से मेरा 15 पॉइंट लेके जा चुका है. I'm still in a trade. 10 points. Let's see if it bounced back. 12, 11. Another mid band on mid band. Extreme low के नीचे भी mid band चल रहे हैं. Do we have a higher low, please? We have a higher low. Now shoot to the upside. Make it a SRES. Oh, it's not, because Nasdaq is. I may close the trade at 20 points back in. Wants to. The bottom rally done. Extreme low, nahi sir. 20 points. I am calling it a day. I'm done. Close the trade. It's not stopping with. Nahi sir. Extreme low भी respect नहीं. So SL got hit. I waited. Look, still going down. Nasdaq still has lots of room. Nasdaq has 715. 66, so I can't do. See, still going down. So we can't expect it to, like, because Nasdaq still has 600. So 100 points too. Still can literally go down 20 more points. So if you don't take a stop loss, things will go in the negative mode. Look, from 90 has fallen to 61 and still falling. 59, 58. The Nasdaq ठीक है, 17,600. Maybe that's the only time we have. Nasdaq still has a gap. 51, 55, 54. So 40 points हमने नहीं ना लेना लॉस यार. इस तरह तो 5 पॉइंट होता है नीचे से. मैंने फिर आज खींच गया थोड़ा. सर एक्सट्रीम लो सिर्फ नैस्डैक रह गया और हमारे पास कुछ है नहीं है इस वक्त. आ गई है लेकिन इट्स Nasdaq got what number?
ये रिकवर हो रही है लेकिन नैस्डैक हमें अभी जरा मार गई है. ये पता नहीं है ना, ठीक है वापस तो आ गई है, but we have to keep an eye on exactly where it could possibly. It recovered back to 85, but I can't take that risk. Too many accounts attached. You fell to which point? 53, man. 90 से भी 53 गई. I have a strict habit of taking a stop loss. I'm not just randomly entering, guys. Nasdaq कहाँ तक गई जी? 750. 756. Yeah. The only problem is you can't predict where it's going to bounce from, right? So now it's a profitable trade at the end, right? 50. But how long can you hold for? Do you hold for 5 points, 10 points, 8 points, 9 points? 45 points, right? That's a huge. And I got out at 20. I said, मैं तो 20 पे निकला हूँ ना. मैंने उसको बंद कर दिया था ना कि 20 का स्टॉप लॉस 90 पे एंटर हुआ, 80 तक बैठा और 80 से नीचे 70 तक. भाई it literally can ruin you if you don't put a stop loss in, right? So that small loss of that 5 points or 20 points, I can recover, no problem. But 45 points are like, or ES में. लेकिन तुसी वो पूरी प्राइस तो नहीं पे कर दी थी. ठीक है, ठीक है, ठीक है. हाँ जी, मैं देख रहे हैं सर, देख रहे हैं. It went to 51, 53 यार. My God. नहीं वो ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो $55 एक माइक्रो मुझे नेगेटिव दिखा रहा है. $55 वन लॉस, राइट? सो आई एम नॉट श्योर व्हिच. मैंने एक माइक्रो डाला था. तो 260. Now we'll enter MNQ at 76 ताकि वहां से रिकवर थोड़ा करते हैं. नहीं अभी नहीं सर, अभी देखना है नैस्डैक को. नैस्डैक ने क्या करना है अभी तो एक्सट्रीम लो दोबारा टेस्ट कर रही है. So Nasdaq hit 17,656. Yeah, 17,000. 18,200. 500 points fell since morning.
ठीक है जी। नहीं नहीं, वो नहीं करना, वो नहीं करना, हो गया जी। लेकिन अशरफ भाई कुछ तो लिया करो, एक सेकंड। देखो इत्थे ना ए क्यों है यार, चलो ठीक है, ओ फिर वो दूसरा अकाउंट उधर ना बाय करना, ओके ठीक है, समझ आ गई, यही यूं चलाओ अपनी तरफ, क्योंकि तुसी हाँ जी यस, तुसी ਇਹਦੇ ਚ ਲੌਗਇਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਧਰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਆ। नहीं नहीं खोल सकते, कोई बिग डील नहीं है, लेकिन तुसी उधर नहीं खोलिया, इधर खोलिया। नहीं 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 कैंसिल होंदा ना, वन टाइम है, थोड़ा रश कर गए हो एनीवे। नहीं नहीं हो जाएगा, इनू ट्रेड करी जाओ, इन्हें भी ट्रेड कर लो, इधर चो भी 3000 कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से चली गई जी, 90 से 17 तक चली गई, बट नीचे का स्टॉप लॉस इतना ज्यादा है कि वी कैंट प्रेडिक्ट इट। नहीं नहीं डजंट मैटर, इधर लॉग इन करना सी। हाँ हाँ आ सकता है, कर सकते हो। ग्यारह बजे वाली कैंडल सर, एक्सट्रीम को दूसरी दफा उसने टेस्ट किया है। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं उस दिन कोई मसला सीगा। हाँ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, व्हाट्स द लोएस्ट नंबर दैट इज नॉट इवन देयर, एक्सट्रीम लो का लोअर भी हो गया जी, 5180। ओफ, व्हाट हैपेंड हियर, ये क्या हुआ भाई? somebody speaking? नहीं नहीं, लेकिन अभी क्या हुआ है, ये 5237 पे आ गए।
5150 यार 100 पॉइंट मूव कर गई प्राइस फ्रॉम 51 या 5153 to 5253. How are you supposed to trade in here, man? हो गया अशरफ भाई यार Nasdaq the large triggers बंद करो यार small and I don't know how. हाँ एक सेकंड sir एक सेकंड I have to go and remove these for you. Small triggers ताकि नजर ते आवे तो $50 for 90 failed. नहीं हो गया finish. हो doesn't matter. नहीं वो draw down नहीं. ये नहीं है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल 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 और फिक्र ना करो सब क्या हो जाएगा मैं कुछ करा दूंगा थोड़ा एक सेकंड कनेक्शन पढ़ दिया टेक प्रॉफ नहीं अपना टेक प्रॉफिट अलग करो बाकी अलग करो देखो तो पर दिया दे विच ते अकाउंट है ए हो चुका है ए दो ब्रांड न्यू फ्रेश ने आपने कौन सा ट्रेड डाला ठीक है नो गुड गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट ओके अशरफ भाई अगर गो क्योंकि 20 मिनट FOMC ने आ जाना है तो मैं चलना है नहीं वो कुछ भी नहीं वो नहीं कर सकते तुसी उन्होंने ट्रेड नहीं करने देगा हाँ जी नहीं वो नहीं आएगा वो खुद ही निकल जाएगा हफ्ते बाद हाँ जी यस 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 हाँ जी बिल्कुल ओके थैंक यू सब लेकिन मेरे टारगेट पूरा होगा तब तक तो नहीं लूज नहीं करना एक दिन कोई 450 से ज्यादा बनाए कौन सा दिन था कितने बनाए लूज करना शुरू कर ज्यादा ना लूज कीजिएगा रियलाइज प्रॉफिट 450 होना चाहिए रियलाइज्ड
आज एक्सपेक्टेड लो ने थोड़ा तंग किया, एक्सट्रीम लो। ये है ना तो इससे बहुत है जी, है हाँ, नहीं 450 से पूरा नीचे, वरना आपका टारगेट बढ़ जाएगा जी सर। हाँ बट ये ऊपर जा रहा है पर उसको पिक नहीं कर रहा है। दिखाएं, नहीं पहले हम सिम पे टेस्ट करेंगे। ये देखिए पहले यहाँ पर जाके, क्योंकि मार्केट इतनी, यहाँ पर जाऊंगा, ये लिखा है या इस ब्रेकआउट के बाद लगाना है ना, तो इसको मैं कहूँगा यहाँ क्लिक करें, ये लिखा है बाय स्टॉप लिमिट। हाँ लगाया लेकिन ये पिक नहीं कर रहा उसे जैसे नहीं अभी देखते हैं, सिम पे देखते हैं। थ्रेशोल्ड है ना आपके ट्रेडर वेट में, ठीक है। So the concept, if you don't take a stop loss and you keep waiting, it fell 90 points from our area. Even if you took 80, it fell 30, right? So you have to come up with a plan to make sure at what point I'm calling it, even though if it can go up, right? But what if it goes down to like another 100 points, right? So stop loss is key to any particular trade. And still market, like it shot from 53 to like 53 in a matter of what, less than 10 minutes. हम Nasdaq पे भी वेट ही करते रह गए, 600 पे उसने 656 से ले गया। सर अब पिक कर रहा है। हाँ कर रहे हैं। पहले पिक नहीं कर रहा, दूसरे ऐसे ही कर रहा है। चलो हजारों आए हैं आज, तो मैं तो हाथ तो 30-20 को देख भी नहीं पा रहा इस वक्त। एक एरिया ट्रेड लिया था, वहां से 40 पॉइंट गिर गए। नहीं एरिया में कुछ नहीं होता, एरिया में आपका पहला अटेम्प्ट आता है एंड यू आर होपिंग दैट इट विल शुड। देखिए 100 पॉइंट वहां से मूव हो चुकी है, 53 से 51 50 या एक 100 पॉइंट मूव हुई है। सारे अकाउंट ईए वाले पास, और ये ईएस की बात कर रहे हैं हम, नॉट नैस्डैक। नैस्डैक चली गई है 656 से, यार आई कैन इवन टाइप फास्ट इनफ द नैस्डैक नंबर्स। 18,000 माइनस 17,656, 344 पॉइंट नैस्डैक मूव कर गई है इन लेस देन 5 to 8 minutes। पांच लॉट मेरा ख्याल है थोड़े ज्यादा है, 90 से 53, क्योंकि मैं अब उसको कितना होल्ड करूं, लाइक 20 देखूं 30 देखूं, वो 5 पॉइंट को खींच के मैं 20 पे लेके गया हूं। लेकिन मैं नैस्डैक से इस अपने अकाउंट्स रिकवर करता हूं। इफ इट गोज टू S2, लेट्स सी। मैंने मैंने अपना लॉट सिर्फ 1 रखा है। ये इफ
dangerous mistake like that happens, it's But that's very unfortunate. It doesn't hurt. the 91 it didn't respect, 80 it didn't respect. So both of these did not respect. So today, extreme low did not get respected. Back in expected low. So he's gonna start speaking that person. So let's see. Now I have to wait for ES to go below at least 50, 5150, because it did not respect 90, did not respect 80. So now we're waiting for the price to go to. सर अब Nasdaq क्यों 1510 पे देख रहे हैं? नहीं इम्पॉसिबल है Nasdaq को देखना, वो है क्लोज करें, इसकी टैब बंद कर दें. Nasdaq 15 आज Nasdaq में 30-20 पे भी नहीं खोली हुई मैंने, सिर्फ Nasdaq में देख रहा हूँ. हाँ ना टैब नहीं, नीचे से वही बंद कर दें. नहीं वो वहां पर नीचे MNQ की टैब बंद करें. ये कंप्यूटर में लाइक 16 गिग की रैम होगी तो 32 गिग की होगी तो आप इतने चार्ट खोल सकेंगे. Saw point. बहुत बड़ा हो है ना. 37 times 5 तो $310 है ना. 925 बिग जॉब मैन. अब उनको
मैंने एक माइक्रो लिया था, आपका भी एक ही माइक्रो गया था? दो आपने डबल किया होता है, ठीक है ठीक है। तो 267 राइट, सो 267 पे बंद हुआ है। 267 डिवाइडेड बाय $10, तो 26 पॉइंट पे हमने स्टॉप लॉस। सर वो इतना लोड डल चुका है MNQ का, उसको जरा थोड़ा टाइम लगेगा। आपने 30-20 में भी खोला हुआ? नहीं, वो 6-7 दफा क्लोज आ गई थी 10। हाँ हाँ। और देखिए वहां से गई कितनी ऊपर है, लाइक 120 पॉइंट वापस चली गई राइट है। नहीं, मैंने अपनी एक माइक्रो में भी मैंने 26 पॉइंट होल्ड किया है। अब कितना होल्ड करें यार। पहले मैंने जो टेक्निकल रूल है 80 से नीचे मैंने 75 बोला था कि ठीक है जी 75 निकलना है। उससे भी आगे मैंने 10 पॉइंट एक्स्ट्रा अपने आप को दिए कि क्योंकि वो जिस स्पीड से गिर रही है वो 53 से एकदम 5000 पे चली जाएगी तो है ना। सर ट्रेडो वेट सर और यार आपने लॉस लेने गए हैं ट्रेडो वेट में, आपका पूरा निंजा ही क्रैश हुआ है। फुल लॉट लिए हुए हैं अपने ऊपर से, ग्रेट। आपने निंजा में तो ट्रेडो वेट तो नहीं सही खोला हुआ। अकाउंट 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 सर आपने ट्रेडो वेट की इन्वायरमेंट नहीं सही की हुई, बिल्कुल सर। आपने $2400 बना लिया, तो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आई हैव टू क्लोज दिस। हो गया जी, बंद कर दिया। थैंक यू तो है, लेकिन अब आपका $2000 बन गया है, आपने उसको लूज करें यार। क्रैश हुआ वो भी राइट डायरेक्शन में। सर ये अभी आपने MNQ तुना हुआ है तो अब वो पूरा रिलैक्स लेके आएगी। आई डोंट नो 15-10 पे लोग MNQ क्यों देखते हैं यार, ये नहीं अभी तक समझ आए, कर ही नहीं पाएंगे। आपको पूरा निंजा रुका हुआ है यार, इसको बंद करें, नो करें, वो तो नहीं, वो बंद हो जाता है, वो निंजा ही क्रैश कर गया। हाँ 15-10 पे MNQ, फिर 30-20 पे, और 8 मार्केट्स। ये देखें मेरे पास क्या मार्केट खुली है, ES, ठीक है, सिर्फ ES 15-10 मेरे पास क्या खुला, MES जो मैं लीड कर रहा हूँ, और साथ ES 60 मिनट पे NQ 240 पे, ये मेरा सेटअप है। ना मैं क्रूड ऑयल देख रहा हूँ, ना मैं नेचुरल गैस देख रहा हूँ, क्योंकि हालांकि ये 64 के ग्राम है, ठीक है। मैंने ट्रेड ES MES और MNQ और NQ 4 मार्केट्स हैं, और वो भी डिफरेंट चार्ट्स में, क्योंकि आपका क्रूड ऑयल भी खुला है, नेशनल गोल्ड खुला है, यस। NQ को 15-10-30-20 में नहीं खोले, उसके पास इनफ रैम नहीं है कि वो स्पीड से करे।
नो कल मैं वो दूसरे ऑफिस में होऊंगा 1575 ट्रिनिटी पे, याद नहीं होता मैं यहाँ सिर्फ क्योंकि डैनियल की कोई लेक्चर्स नहीं है तो अशरफ भाई सिर्फ मार्केटिंग की क्लास लगाएंगे। यस ट्रिनिटी, वो सुपर एरियाज के नीचे एड्रेस लिखा हुआ। नो प्रॉब्लम। कुछ भी नहीं होगा सर, आपने इतनी तेज मार्केट में ना छतरी खोल ली और बाहर तूफान आया हुआ। एग्जाम्पल मैं पूरी दूंगा, फिक्र ना करें। स्पीचेस हाँ एफओएमसी की बड़ी स्टेटमेंट, मदर ऑफ ऑल न्यूज। Today it fails. है स्पीड सर अभी one thing is, if anybody is able to make money today, they can do it any day. Like, this is how rough it is. Like, you know, it doesn't get any more rough than today. Like FOMC, tariffs, like Trump. ठीक है, अब पूरे आ गए अंदर। स्लो स्लो कीजिएगा लूज, पता लगे एकदम अकाउंट निकल जाए 100 पॉइंट में।
Where are we? 52. We're back into that zone of expected low. Back down. So anything below 53, because also want to clear, I got a couple of messages, just like he asked. If I made more money than 450, do I get disqualified? No, you don't get disqualified. Your account is healthy, is fine. They raise your target. So this person said, I made 583. Realized P&L, I made 583. So it's okay, no problem. If you want to keep 583, you like companies like Apex, companies like Bullnox, companies like day traders don't want you to lose money because they have that built in. All that happens is 583 divided by 30%. Now your target becomes $1,900. So if you lose it, because it's an exam stage, right? Why do you want to have more target ahead? So in his case, he ended up making $2,000 right now because trade closed and then he was in the right position. Pure gamble, luck, whatever, right? So if he doesn't lose this 2,000, he's like, I made 2 grand. I want to show I have 2 grand. 2 grand divided by 30%. Now your target has gone from 1,500 to 6,500. So yeah, but if you don't lose at 6 o'clock, see, some users, they will leave this and they say, all right, I made money. And then on 10th day, Apex says, or Legend says, hey, you made too much money. So what I'm saying is, in only Legends and only in other companies called take profit. In their stage 1, you can lose it to stay within their target. All stage 2s, they're not allowed to lose because you will lose your threshold too, right? So if you made money in a PA, so PA you should be doing micros anyway. Like, so there's no possibility for you to spike. So you don't get disqualified. All you have to do is
मेरे लिए क्या बेस्ट है? किस चीज का आपने ट्रेड डालना है तो सर वेट करें 53 से नीचे। हाँ, आप कंप्यूटर हब रीस्टा बंद करें उसको मैनुअली, क्योंकि आपने MNQ खोला हुआ। कहाँ से करें? हाँ, होल्ड करके बंद करें फिर रीस्टार्ट करें। मेरे को मैंने तो ऑर्डर फिनिश भी नहीं किया था और मुझे जब अब याद नहीं हुआ कि पावर में कब तक बोलना? सर इसने 3 में 1 घंटा बोलना होता है। ये बैठा है, ये अभी बैठा हुआ है, पता नहीं क्या कह रहा है। It is too soon to say what will be the appropriate path for monetary policy. We understand the benefits of a solid economy where workers can find jobs and inflation is low and predictable. We also understand that elevated levels of unemployment or inflation can be damaging and painful for communities, families, and businesses. That is why we at the Fed will continue to do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. अब क्वेश्चन, तो स्पीच उसकी खत्म हो गई है, अब वो Q&A शुरू करेगा। स्पीच वो खत्म। It feels like quite a moment to be speaking with you. Thank you for your time. He's got it. I want to thank you for being here and thank you for taking the time to speak with this group of business journalists. Also like to give a special thanks to Heather Long of the Washington Post who helped make this event possible. So for starters, sir, how's your week been? Just fine, thank you. Care to elaborate? So far, so good. Sure, Paul, yes. Thank you so much for being here and taking my questions. We're talking about the economy as being a very strong economy. You characterize inflation as coming down, employment as being very strong still. However, President Trump earlier this week, when asked about the market volatility we've been seeing, said the volatility was, quote, to be expected. This is a patient that was very sick. We inherited a terrible economy. A lot of voters did and do agree with that assessment, or at least in part. I'm wondering how you would respond to that assessment and the disconnect between the story of the data and the way a lot of people are feeling about the economy. Sure. So let me just be clear to start. I make it a practice not to respond to any elected officials' comments. So I don't want to be seen to be doing that. It's just not appropriate for me. But the situation, I think, is this: and people, when they're surveyed, they are happy about the economy. That seems to largely reflect the increase in the price level that happened when inflation was high, 2021 and 22 and 23 largely. Inflation is now back down to much more normal levels. Unemployment is low, the economy is growing, but people are still experiencing that high price level. In other words, prices don't go down. They know they're paying much more for the basic necessities of life. And they're right that they are, and they're not happy about it, and they're right not to be happy about it. So I think that accounts for the negative sentiment. We, of course, we're looking at inflation, which is the change in prices, and we're seeing that has come down quite a bit, and that, unemployment is actually low. It's sort of very close to measures of maximum employment, and the economy's growing. So all those statistics are good, but I think the price increases of the past few years are weighing on people's budgets. So I'm from Milwaukee, and I'm talking to business leaders, executives, and consumers in our community, that region, for the last few weeks. Mostly before this week's news, gentlemen, they're troubled and they're nervous. One business owner told me, if we go into the recession, we'll have, and he asked me to share that with you. What's your response? So I guess I would say, let's start with the fact that the incoming data right through this morning's employment report, which admittedly is from roughly a month ago, the week of March 12th, they took the data in, which still shows a solid economy. Unemployment is still low. I understand the uncertainty that's weighing on people. You asked about a recession. We don't make a probability forecast of how likely it is for there to be a recession, but many outside forecasters do, and many of them have raised the likelihood, albeit from very low levels. It's not something that
that anybody now is forecasting, or some people are starting to. But so there's not much more I can say about that. I realize that the uncertainty is high, and what we've learned is that the tariffs are higher than anticipated, higher than almost all forecasters predicted. We still don't know where that comes to rest, though, and we're just going to have to see that through. And at the congressional hearing last year, one of the U.S. representatives said that you were pretty boring, and you thanked him and said that you Yes, sir. considered that a very high compliment. हमने किसको भेजा अपने आप को? नहीं, आपके पास आ गए हैं ना? हाँ, देखें, आप सेंड कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। आप अपने आप को ही ट्रांसफर कर लेना, तो आप कर दें जैसे $1000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? और ये गए, so send money. From an economic crisis, it's by design, it's political. Myself, ये लिखा है आपकी करेंसी डिफरेंट। पहले हमने इसको मूव करना है कैनेडियन में। आपको लैपटॉप में ये खुला हुआ है? ओके। ये आ जाए तो हमने पहले इसको ट्रांसफर करना है फ्रॉम US टू कैनेडियन डॉलर। हाँ, ये अभी एक दफ़ा खुल जाए। आप ऐप दोबारा खोल लें, ये इंटरनेट नहीं आ रहा है इसको। We don't comment on those decisions are made by others. What we do is we use our tools to try to achieve the goals that Congress assigned us, which is maximum employment and price stability. So I like to think that over time we're still a source of calm, rational analysis. And also, that's really what the business of forex is providing. Financial 51 सेल 83 से नीचे सर, 80 से नीचे एक्सपेक्टेड लॉस से अगर नीचे गिरती है फिर इनका अकाउंट ले लें, उसमें बना दें। कनेक्ट हुआ, ठीक है। लेट्स डू convert. Let's say 1000 US to Canadian. हो गया 1.41 मिल रहा है। कन्वर्ट हो गया। अब हम जाएंगे कैनेडियंस के अंदर, सॉरी कैनेडियन, सेंड टू माई सेल्फ, करेंसी कैनेडा, तो कह रहा है इंटरैक्ट, तो यहाँ अपना नेम लिख दें और यहाँ ईमेल लिख दें, तो आपको ई ट्रांसफर आ जाएगा और वो आप किसी भी बैंक में डाल दें। We just have to go through that process, and this is kind of a manifestation of our election cycle and a new administration coming in with new policies. And given all of the change happening and the fact that we are in a period where things have not settled in yet, and the Federal Reserve and U.S. Chair are very projection, data-driven, policy-driven. How do you handle moments like now? I mean, can you tweak your plans and projections? Do you just kind of have to reset them? So, what we've had since in the last few months is from the staff has been a placeholder. Rather, they wouldn't call it a forecast because it's so uncertain. They call it a placeholder, and that's kind of how we've been thinking about it. So it's a good time to take a step back and let things clarify. That's why it's just too soon to say what the appropriate monetary policy response will be to these new policies. It is just too soon to say. We can't say with any confidence today. So that's what we're doing. We've taken a step back and we're watching to see what the policies turn out to be and the ways in which they will affect the economy. And then we'll be able to act. Fortunately, our policy stance is in a good place for us to do that. We're probably moderately restrictive, let's say. So it's not really tight policy, but which is appropriate since inflation is a bit above target. So we think we're well positioned to address whatever may come.
And in the meantime, I'd say we're waiting for greater clarity before we consider adjustments. This is sort of in Wisconsin that they can't make their plans. They want to expand. They want to build a new facility. They want to hire or do whatever the future calls for. They say we're trying to look around the corner. We're not even sure what the corner is, and we're not even sure what's around the corner. Sounds like they're in the same position as you are. No, well, we hear the same thing. Of course, we have an incredible network of contacts with businesses and also universities, nonprofits, all different sectors, through the Reserve Banks and also through the Board of Governors. And that's what we hear. But again, it's a process. We're going through it, and I think we will know when we know what the policies are exactly and what their implications will be for the economy. That will all become clear. And I think that'll be a time when people can make decisions. In the meantime, no, I get it. We're hearing that a lot from people, and we are kind of in the same place, which is waiting for clarity about what our policy path should be. We'll have to see. As you're talking about placeholders right now and having something in the place when there's so much that we don't know, it does occur to me that this is not the first economic shock that you have steered the markets and the economy through. Obviously, there was COVID almost exactly 5 years ago. It seems similar in certain ways with a lot of uncertainty, a lot of shock, also potential disruptions to prices and to supply, which is very much in the Federal Reserve's wheelhouse. Okay. Where you say and Liberation Day be compared to kind of the economic effects of COVID? Are they totally different, somewhat related? I think each situation is different. There was COVID. There was also then in the response to COVID, then there was high inflation, and then there was soft landing, and now we have new administration and changes in policies, and every situation it kind of rhymes, but it's not exactly the same thing. And so in this situation, what we face is what I mentioned in my remarks is you actually have risks for higher unemployment and higher inflation, and that's difficult for a central bank because our tools, which consist of interest rates, either slow down or speed up the economy over time, and higher unemployment would call for speeding up the economy, and higher inflation would call for slowing it down. So you can be in a situation, if we find ourselves in that situation, we look at how far each of the two variables is from its goal, and we ask ourselves how long will it take to get back, and we weigh those things and make a decision about what to do. There's no question that's a different situation, very difficult situation. When we faced high inflation, it was painful for the country, painful for the people that we serve, but we knew what policies we needed to raise rates quite a bit. During the pandemic, we knew what we needed to do. It was very clear the direction that we needed to take with force, and we did. It's almost a situation potentially where the dual mandate is at odds with itself. The two goals are, as we say, in tension, or they may be. I'd say that's not what we're seeing right now, but it's the effects at the margin right now would be for higher inflation and perhaps higher unemployment, but that's a marginal effect. I would say we're not in a situation like we were in the 1970s where the two goals were really both pulling in opposite directions and required. And that's what it's just very hard for a central bank to be the answer to a situation like that. That's not the situation we're really in today. One of the questions from the audience that we had is if unemployment takes off and inflation takes off, which lever do you go for? What do you do? So we actually have we have a document called our consensus statement, or the longer version is statement on longer run goals and monetary policy strategy. And the sixth paragraph of that actually contemplates when the two goals are in tension. And what it says is, think about how far each variable is from its goal, and think about how long it would take for each to get back. So in a way, it's an equation. You're comparing two quantities, which each have two variables. And then you say, you look at that and you think, what do we need to do? And typically this doesn't happen very often, but if one of them is further away, then you would focus on that one. In the case of high inflation, they actually both point in the same direction. The labor market was overheated and inflation was very high. So both of those called for tight monetary policy.
This could be different, but again, we're not actually facing that today. I feel like there's another tension inherent in your job, which is that you're looking at the macro economy, at the global economy really, and the US places in it, but also the data you're looking at is very profoundly human, as Jim has been pointing out. Jobs, I think, and prices are probably the two most human pieces of data, and certainly in our day-to-day. हैं सर वेट कर रहा हूँ वो मैं नैस्डैक का वेट कर रहा हूँ नहीं मैं तो अभी बैठा हुआ हूँ कि कोई अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट एक ही आई थी वो एक्सपेक्टेड लो स्ट्रीम वाली वो भी ऐसा लगी तो Keep the focus on that. And we know and are very conscious daily that the things that we do have a real effect on people's lives. We know that, and it really does focus the mind. And I think if you talk to people that said there's a very strong commitment to serving the public as well as we possibly can. Economic events are just very, very unpredictable at times, and there are shocks that you can't see coming. But nonetheless, our job is to, whatever happens, use our tools to bring the economy back to stability, back to price stability, back to maximum employment. And that's what we do. But you're right, we try to keep everybody in the room with us when we're thinking about what to do. So in response to that, Harley Davidson, which is based in Milwaukee, moves some production to Thailand. Now the company might be whipsawed again by these tariffs. नहीं ट्रांसफर ईमेल में आएगी आपको एक ईमेल आएगी फिर पासवर्ड आएगा So it just isn't, I really want to stick to our name. I mean, we're doing this great thing called independence of monetary policy. And that's critical for us to be able to do our job. And for us to keep our independence, we need to not succumb to the temptation for one of the employees and trade policy is one of those. So one of the issues that people want to try to pull us in, almost every issue really. And we just need to stick to our own and not take the reins of it. So trade policy is a classic one. Energy policy is another. Climate change, immigration is not. There are other have economic implications, and it puts us on that. If we treated those as the case for our independence would be clear. So I really think stories, you know, the policymakers who are in charge, they're having those stories too, and they're reaching a judgment about what's in the best interest of the country in the long run. That's what they are doing. I guess, you know, so it's not for us to come. At a moment like right now, when there's so much change and incredible uncertainty, when you're watching things unfold, what do you thought was like practice and what do people do inside the government? So I'm very proud to work with the people I work with. I can tell you that in times like this, or times like who were here for the global financial crisis. They've got 25 years, 45 years of experience with crises, and they step forward and it's just incredible what they can do and how good they are. It's a great honor to work with. So right now isn't that situation. This is a situation we have. So, you know, our trade people, our inflation people, and our macroeconomists are all working hard to, you know, to kind of digest the news of this week and try to filter that into the forecast that they'll make. And policymakers are doing very much the same thing, and we're reading everything we can about what's happening and lots of outside analysis too. We don't have an FOMC meeting until May 6th and 7th. So it's a very but we're kind of thinking ahead to that and working through it. I will say that, you know, we feel like we've been no, it's like I said, you have inflation is going to be moving up and growth is going to be slow, but it isn't really. To me, it's not clear at this time what the appropriate path for monetary policy would be, and we're going to need to wait and see how this plays out before we can start to make those adjustments.
Yes, yes, pretty frequently. Absolutely. And the same was true during the other crises I've been through. And not only that, but we do regularly. The IMF World Bank meets here in Washington twice a year. We go to Basel multiple times a year to meet. That's all central bankers. And there are also G20 meetings, G7 meetings where the central bankers are there. So we're kind of regularly meeting and talking. And when we're not doing that, we're also texting each other Is there a group chat? Yeah, group chat. They're trying to like sarcasm on security. Yes, I have. Donald Trump's approval rating. बहुत डिफरेंस चल रहा है आपको कोई आइडिया नहीं है कितना है ठीक है जी मेरे ग्राफ कैचअप कर रहे हैं अब यहाँ है सर एक्सपेक्टेड वो 50 वो देखे स्ट्रीम लो पे लगाया था वहां पर रिजेक्शन देखे 90 पे लगाया था ना 90 से गई 53 पे अब ये यहाँ स्टॉप लॉस लिया 20 पॉइंट का 10 मिनट्स में वो चली गई 100 पॉइंट तो अब मेरे पास एक वैल्यू बची है नैस्डैक का 17600 तो इसका वेट कर रहा हूँ ओके मैं आसान पहले नया चार्ट खोले एक कोई नया चार्ट आपके वो चार्ट ये 30 मिनट का नजर आ रहा है ठीक इस पे राइट क्लिक करें इंडिकेटर्स में था इंडिकेटर्स और उसमें आप क्या करें ऐड करें इंडिकेटर उसका नाम है सुपर एरियाज एल्गो है ना ओके गिव मी एनी डेस्क आई विल सेल आउट नंबर दीजिए 1312 1312 587 हाँ जी एक्सेप्ट कीजिए Give me a second. ऑर्डर में निकाले ना वो लग वहाँ आ रहा है निकल गई है
एक मिनट हो गया 12 बजे भी ऐसे हो रही है ऐसे सर वो पीछे बैठा है चाचू हमारा। आज चाचू ने एफटीएमओ में हेल्प कर दी लेकिन इसमें तो एक उठता है दूसरा आ जाता है तो वापस आ गई नीचे, काफी एक्सट्रीम लो की तरफ चलने 5200। I really don't have anything for any years right now. मेरे ग्राफ सब catch up कर रहे हैं after 25 minutes. Because बस वो ग्राफ पे रहा था ऊपर देख रहा था और डाल रहा था ठीक है जी। सर अभी आया नहीं क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से, 17600 है ना, तो इट्स फार फॉर Nasdaq to go. Next candle at 12 o'clock open. So it's between expected low and extreme low, 7656. मैं Nasdaq का लूंगा, ES का नहीं, Nasdaq। क्या है ना फिर ना रोटी खाते हैं ना चावल खाते हैं बेचारे देख लेते हैं, अभी 12 तो बज गए हैं तो अबाउट कॉल। सिर्फ मेरे पास प्लेट में ना एक्सपेक्टेड लो ने तो आज एक्सट्रीम लो ने फिर तंग किया देखो, तो मैं तो स्टॉप लॉस लेके बाहर आ गया, लेकिन अभी सिर्फ Nasdaq का एक्सट्रीम लो मेरे पास पड़ा है, तो अभी अगर आ गई तो, क्योंकि एक्सपेक्टेड लो से शूट की एक्सट्रीम लो से 100 पॉइंट 10 मिनट्स, क्योंकि वो जब गिर रही थी मैंने 53 को देखा, मैंने कहा भाई टू रैपिडली फॉलिंग, सो इट्स ओके। नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं आज, कपड़े टाइट हो रहे हैं छोड़े पर। ये देखें सर आगे, ठीक है। तो हाँ जी, फ्लो बॉट आपने, ये आपका कॉन्फ़िगर हुआ है, इसको मैं अपने साथ अटैच, आपने मेरे साथ अटैच करना है, ओके। ये आ गया MES का, ये अभी मैं सिम पे भेजता हूँ ट्रेड, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे हेलो, तो बल अपनी ईमेल व्हाट्सएप करें ताकि मैं उसको साथ अटैच कर दूँ। मुझे व्हाट्सएप करें अपना ईमेल एड्रेस, करेक्ट करेक्ट 647-228-0694 0694।
है नहीं, अभी चल रहा है वो, देखिए क्वेश्चन आंसर चला रहा है, तो वो अभी सेशन में बैठा हुआ। जनरली 10-15 मिनट के बाद, लेकिन अभी सबसे जो 3 दिन में मसला बड़ा है ना, वो हमारा मिस्टर ट्रम्प के टैरिफ्स हैं। तो 3 अप्रैल को, आज है ना आपका 4 अप्रैल, तो कल जब वो आया और सुबह उसने कहा कि टैरिफ्स हैं, और कल रात भी मार्केट गिरती रही। अप्रैल 2 टैरिफ्स हुए और मार्केट गिरी कहाँ से, तो अभी कल हुआ ये कि चाइना ने टैरिफ्स लगा दिए यूएस पे 34 था। तो अब उसका जो इफेक्ट आया वो रात को आया कि हमारी मार्केट और गिर गई। अब सुबह उठ के ऑफ कोर्स जो स्टॉक्स खुले, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, तो हमने एरिया, क्योंकि जब मार्केट खुली तो न्यूज़ आई, न्यूज़ अच्छी न्यूज़ थी कि जॉब्स ऐड हुई हैं, लेकिन जो पीछे हालात चल रहे हैं उसमें इतनी सी गुड न्यूज़, तो ये तो वो ही है ना, आपने गाड़ी पूरी टोटल कर दी है, आप कहते हैं जी मेरा स्पेयर टायर ठीक है, मेरा स्पेयर टायर बच गया, राइट। बहुत अच्छा हुआ फायदा, मेरा स्पेयर टायर ने कुछ नहीं, पूरी गड्डी राइट ऑफ हो गई, स्पेयर टायर सर चलना है, तो इस वेले हो रहा मार्केट। तो इतनी सी गुड न्यूज़ ना वो नजर नहीं आ रही। एग्जैक्टली। तो क्योंकि वो जो मीम देखे हुए बंदा कहता, एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हेन विल इट गेट करेक्टेड, वी डोंट नो कि ये बॉटम है कि नहीं। तो ये बॉटम हमें कहाँ से नजर आना शुरू होगा, 60 मिनट पे हायर लो से। ठीक है, हमारे एरियाज कहाँ टच होने शुरू हो जाएंगे, R1, R2, R3, ये थोड़ा थोड़ा हमें ना अगले वीक शायद सिग्नल। अब अप्रैल में टेस्ला की अर्निंग्स भी हैं, राइट, और इस वक्त मेरा ख्याल है पब्लिक एनिमी नंबर 1 इलन मस्क बना हुआ है यूएस में, फ्रॉम द हाईएस्ट रेटेड पर्सन टू द लोएस्ट रेटेड विद इन like the 3 months, because he pushed us, like, so he made SpaceX, Starlink, Neuralink, वो जो बैटरीज टेस्ला बनाई, सब कुछ बनाई, लेकिन एक चीज को उसने जो छेड़ा गवर्नमेंट में आके, दुखती रग गवर्नमेंट की है, वो जो सोशल सिक्योरिटी। एवरीबडी सेइंग why a private person is going in, like we have a prime example in our country. You are a cricketer and you start to go into politics, they will destroy you, क्योंकि पॉलिटिक्स वाले होते हैं। तो आप जब अपनी डोमेन छोड़ते हैं, so this is the problem that happens. So same thing, any person who is a public figure or a you don't go in and mess up somebody. So this is the result. And now Trump is saying certain things are okay, but I agree with fundamentally some things, but it's too difficult to change like that fast. You gotta go. वो भी तो 0 से 100 चला जाता है ना फौरन ही, तो उसमें भी तो कोई फिल्टर नहीं है। हर खानदान में एक बंदा होता है ना, सोच के बगैर बोल देता है, तो उस वजह से, so this is nothing unexpected what he is doing, it's just he's doing it pretty aggressively, right? So so last term, it's but people in US are burning Teslas, they're putting them on fire, like uska kya kasoor hai, right? So possible. So now if you see something Cybertruck, people are spitting on it, right? So how it has turned, because it affects real people, jobs in Windsor. Imagine you are a factory worker and you are building automotive plant, and today is your last day, or 2 weeks or 3. Let's say you get a severance or whatever, but how long can you last? Will you last 2 months, 3 months, 4 months, and then eventually, और अगर 500 600 से जॉब चली गई एक सिटी से, कनाडा बेचारा तो वैसे गरीब है, तो ट्रकिंग इंडस्ट्री वैसे ही डाउन है, ट्रक रियल एस्टेट हमारा, तो whole economic crisis is kind of, it's a meltdown in my opinion. Yes, we will get out of it, of course, but there's always casualties. When I open my sportsplex, we spend almost $800,000-900,000 first. So I opened February 19, 2019.
best facility in the world. There wasn't like even Glenn McGraw came, all these cricketers came and they did an inauguration for me. However, first lockdown, COVID started. Second lockdown, because you remember I'm paying $14,000 a month as a lease. It's an industrial unit. When the third lockdown came, you have zero income coming in. How long can you? So we just paid $250,000 just on rent, and how much government gave us out of that is 60 grand, right? With the SEBA loan, right? So there you have to make tough choices at a certain time. So that's our stop loss, right? All right. So same thing here. We just trading like trade by trade, but that's $800,000 stop loss, right? So I don't have to pay taxes for next 10 years because I can keep writing it off that I lost it. So who will win, who will not? It's whoever has a bit of a power. अगर आपका account है, जिस तरह मैंने आपको हमने एग्जांपल देता हूँ, स्टॉप लॉस लिया, इन्होंने इसकी क्वांटिटी 5 रखी हुई थी, ठीक है, मैंने जिस तरह मॉर्निंग में बताया. अब मैंने 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, तो 25 का मतलब है $10 के हिसाब से $5 का 1 पॉइंट, 10 के 2, 250 का. तो मैंने 250 पे बंद कर दिया कि 5190 पे मैंने एंटर किया है, लॉन्ग किया है, कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया है, वो उसको भी पियर्स थ्रू हो गया. 80 से अब मैं कितना होल्ड करूं, 80 से 60 करूं. तो हैबिट बना लें कि आपको बंद करना है. अगर आपका वो स्टॉप लॉस, मैंने कल की वीडियो अपलोड की है, 5 पॉइंट होता है एरी से, लेकिन आज की स्पाइक की वजह से थोड़ा उसको मैंने 25 पॉइंट दिया कि यार अब यहाँ से बाउंस हो जाएगी, यहाँ से तो हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन 53 से अब 53 तक अगर आपके पास सिर्फ $1500 और 5 लगे हैं, वो तो अकाउंट ही चला गया, राइट? सो इट्स ओके. 5 होता है. आज वॉलेटिलिटी की वजह से मैंने उसको 25 रखा, क्योंकि वो उसने एक आध दफा ना हमें थोड़ा सा ब्रेक इवन दिखाया था, राइट? सो थोड़ी सी 1 पॉइंट नजर आया था, लेकिन when Nasdaq pulled it slightly more down and it recovered. If you had an account that could hold that volatility, you're back up and in profit, right? So it shot up 100 points. So it's all at the end of the day depend. देखिए, बिगर हो टारगेट बड़ा होगा. देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बिगर अकाउंट हो, छोटा हो, डजंट मैटर. एक 1500 के डॉलर की ना एक वैल्यू है. ES $1500 में, let's we figure it out. I'll write it on the board while I'm doing his as well, because it can sometimes benefit. So let's realistically look at what's a drawdown capacity. So if you have a $1,500 account, if you have a $3,000 account, or if you have a $7,600 account, 75 on 300K. So at what point, imagine this is real money. This is real $1,500. You went to CIBC, you wired it to anything, but generally I don't recommend going less than 2,500. How much would you play in it in a real account, right? So if it's a $5 on MES, market can move, exactly 1,500 divided by 5. If market moves 300 points, your account is blown. 300 points, if ES moves with 1 micro, your account is gone. So generally users go in with 2 micros with 2 MES. Now you only have 150 point buffer for the market to move. So you have to be very careful on what size of lot you put in. From my 4 years of experience, I know this can easily hold 2, maybe 3, maybe 5. This is what I've been doing I did this in fast track trading. I did in Perdia, Apex. When I do this on 300,000, 5 MNQ or 5X MES. Never together, because it will make it one full lot anyway. So, हाँ जी, नहीं देखें, फॉरगेट ES को थोड़ा सा आपने तेज करना होता है, क्योंकि 30 डेज है ना. जो PAs लगाए हैं उसमें तो यार आप इतना रिस्क ना लो कि इस तरह आज किसी ने अगर PA मेरे पीछे लगाया हुआ है तो उसका नुकसान 250 पे बंद हो गया.
ठीक है, पूरा अकाउंट तो नहीं गया ना, क्योंकि जितनी वॉलेटिलिटी है आजकल, ईएस अगर एक 100 पॉइंट मूव हो रही है, सो यू हैव टू रियली वर्क ऑन दैट, हे how much my account balance can have a drawdown. So here's an optimal way of doing it. We entered at 5190, right? All of us entered at 5190. That was an area. The bottom range was 5180. Okay, we have a 10 point. Now looking at the theory, you go 5180 minus 5, and you have to put your stop loss at 75, right? At 75, you are risking 15 points times 5. So your loss is $75, right? This is you're doing an area trade, and you entered at 5190, and you're looking at 5180 because computer says I could reverse from here anywhere. But you okay, give yourself a bit of a cushion that, okay, if it bounces. So what happened was, some users maybe here will add another lot to, because now they're in 2 micro. So what is the price? One at 5190. Let's say one at 5180. You two double divided by 2, that becomes your average. So now you entered at 5190 plus 5180, 10,370 divided by 2 is your average. So now you have an average of 2 lots at 5185, right? So you entered one here, you entered one here. Again, both are long. This is long, this is long. This is, the word is called DCA, dollar cost averaging. So what are you doing? All right, computer predicted I took 5190, and I'm hoping price is going up maybe 5 points, and I'm taking my profit. If you entered one more here, now you have 2 lots sitting at 2x at 5185. Now remember, now each your lot has now become $10, not at $5 anymore, because you entered here. So when the price, let's say, went from 5190 to 50, because it fell 40 points. If you had one lot, it's 40 times 5. Yes, 40 times 5. $200. If you had one lot, right? If you entered, so what I decided, watching all of this unfold in front of my eyes, I looked at 5180, somewhere around, so this is 10 points. I went again more, a little bit more at the bottom, and I exit in between 25 times 5, $125. So I got out, because I'm not taking any, I don't know how far this thing can continue to fall, right? So I took a loss of $125, and I'm calling it a day. Now, if you entered, if you decide to do an average here, okay, I'll buy one here, I'll buy one here. So now from 5185, remember you are at 2x, you have 2 lots, and it falls to 5150, like 5150, that's 35 points. So you will lose 35 times 10, $350. So I don't like to do averages, especially they can really triple or double down faster. I know users, they enter 5190, next lot 85, next lot 80, next lot 75. All of a sudden they're in 8 micros. It will destroy you, because like 8 micros, yes, the average is, so let's do one, 5190, next 5180, next 5175, what, 5160. Now let's say 5155. You add them all up, you will roughly fall in between here. But you have 5 micros now. 5 micro means $25 a point. And if it slips, it would, आगे दोबारा extreme low. आगे जी वो extreme low. So लेकिन अभी Nasdaq में बैठा हूँ, क्योंकि इस दफा लास्ट टाइम इसने हमें खराब किया है. वो लास्ट टाइम यहीं से तो हम खराब हुए हैं 90 से. नहीं, आज थोड़ा सा फर्क है. यस,
अभी नैस्डैक का जो एरो है ना वो तो बहुत नीचे है जी, बहुत। तो 20 पॉइंट यहाँ से गिर सकती है ना। तो अगर यहाँ से जो पिछली दफा हुआ सेकंड अटेम्प्ट में वो थोड़ा सा दे रही है, बट लेट्स सी, it's like it's playing the recording again. So I will not enter below MES before 5150 because 5150 will put me in the Nasdaq of the same time. 51 देखें पिछली दफा Nasdaq, अब हमें लास्ट टाइम ये चाहिए था, ये जो हुआ है एरिया टच किया और वहां से आपको 6-7 पॉइंट दे दिए, फिर वापस जा रही है, अब डाइवर्जेंस बनाती है। लेट्स सी, यार हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ, क्योंकि वो दे सिंक दा फर्क सीगा ना, वो अगर आ जांदी ना नहीं, लेकिन देखो हुणी भी नंबर देखो ना, इत्थों 150 ਦਾ फर्क है, इन्हों कितना फर्क है 150 ਦਾ, बल्कि 815 200 ਦਾ है, 17600 17800 डिवाइडेड बाय 7 ਦਾ भी लाइए तो डिवाइडेड 30 पॉइंट ਦਾ फर्क है, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब है कि 85 तो 30 गिरेगी तो उधर पहुंचेगी ना 85 नहीं नहीं, हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट ਅਸੀਂ पहुंच गए सी। अगर वो 50 तक चली जाती ना तो वो एक्सपेक्टेड लो ला जाए एक्सट्रीम 50 ग्राफ, ये सॉरी। So this is all. Now we are back in severe extreme low of today. अब देखें ना वो निस्ता एरिया पूरा पूरा रिस्पेक्ट हो रहा है। मैंने एक माइक्रोसेल लिया था 52 लॉस है, तो मैंने 8 माइक्रोसेल आगे उसको लिया, जब जाके $90 का लॉस कर दिया, अदरवाइज तो वो यार अब ऊपर से बाई किया हुआ था। या रूरल मार्केट का मैंने ट्रेंड देखा। अच्छा नहीं, आज तो कुछ एक माइक्रोसेल लिया था, लेकिन वो जब उसने किया ना तो मैंने 8 माइक्रो अभी तक वो गिर रही है। वो देखे ना वो एवरेज करते करते, जो मैंने अभी डॉलर कॉस्ट एवरेज की एग्जांपल दी थी वो आप कर रहे हैं। एक माइक्रोसेल क्या होता है? सर मैंने आपका सेव ऐड कर दिया आपको सिस्टम में, यू आर ऑल डन। सो आई विल डू MES एंड आई विल सॉरी एक चीज कर दो, इनको डुप्लीकेट MNQ कर दो, माइक्रोज MNQ डन। यस, इसको सेव करते हैं सर। हर तरफ उनके तो कंप्यूटर ही बंद हो गया था। इस पे नैस्डैक को 30 20 15 बहुत तेज। देखिए एक्सट्रीम लो का बॉटम नंबर से बाउंस हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ एरियाज आर सपोज्ड टू बी एक्सपेक्टेड, बट the previous one kind of took us in. So Nasdaq I'm waiting 17,600, not entering anything below. देखिए जैसे भी हाँ हाँ, उसको डुप्लीकेट कर।
नहीं नहीं, ये यहाँ से डुप्लीकेट तो नहीं होता, नीचे से जाके डुप्लीकेट कर ले। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट नहीं कर डुप्लीकेट करता हूँ डुप्लीकेट नहीं आ गया अच्छा करेंगे आ रही है जी नैस्डैक इस दफा, देखिए ट्रेन तो पकड़ी हुई है उसने, स्पीड। हाँ नहीं नहीं, वो 100 ही रह गया, ये तो कोई मसला नहीं जिस हिसाब से चल रही है। हाँ जी, बस आप ऊपर से वो ऊपर से सिंबल चेंज कर दें, MNQ या MENQ। चौबीस 100 पॉइंट गिर चुकी है नैस्डैक, वो लिखा होता है 1500 पॉइंट इन 2 days। 22,450 हम दोनों ने इकट्ठे ही देखा था, 17,450 पे आ गई। हाँ जी, वो हमारा एरिया जी। सर 600 सर नैस्डैक MNQ। आ तो रही है 746, 750, 738।
नहीं स्टक हो गई सही है नास्डैक का जो है जैसे साइंस या लैगिंग है नास्डैक का नहीं नहीं लैगिंग तो नहीं एक्चुअल प्राइस है 750 चल रही है 743 आ रही है जी दोबारा एरिया 5167
Take care. All right, Nasdaq 727. Take care. 62, previous low, almost. ਦੋ ਮਾਈਕਰੋ ਲਾਏ ਹੋਏ ਪਰ ਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ Nasdaq ਪਿਛਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਥੋਂ 800 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੌਂਗ 17,800 है ना नहीं 17,792 एक सेकंड देखो 17,800 तो दो माइक्रो पर डे में लॉन्ग किया फोर्ट ट्रेड में अपने पैसे डालने वो तो हाँ उसके उससे बेटर फॉरेक्स स्टार्ट नहीं फिर फॉरेक्स स्टार्ट कम ज्यादा बेटर वो एटलीस्ट रेगुलेशन बढ़ी है उसकी यस कनेक्टेड है सारे लेकिन ये तो कनेक्ट नहीं फोटो खाली अपना आईबी क्या वो है हाँ लेकिन हो जाएंगे ना क्योंकि अगर एनफ लोग आ गए हेलो गुड
पे चली गई थी। इस तरह उस दिन एक्सपेक्टेड लॉस हाई से फेंका था 2 माइक्रो, अब 2 माइक्रो एक्सपेक्टेड लॉस एक्सट्रीम है, एक्सपेक्टेड लॉस से नीचे से देखा जाए फेंक के छोड़ रहा हूँ, मैंने कि 800 से छोड़ रहा हूँ ना मैं। बाय 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 सर, बाय बाय। देखें 800 पे लिया हुआ है 2 माइक्रो, तो अब मेरे पास 4 बजे तक का टाइम है ना, एक्सपेक्टेड लो है और एक्सपेक्टेड लो से भी नीचे है, तो लेट्स सी एक्सट्रीम लो के करीब है। हाँ लेकिन अभी जो है ना यहाँ ये लास्ट टाइम कितना लगा के आई है 705, तो यहाँ से देखते हैं हमारे 4 बजे तक क्या रिजल्ट आता है। स्पेयर टायर ही आया घड़ी तक। मैंने 800 से लॉन्ग किया हुआ है, 2 पर डिया पे 2 माइक्रो लॉन्ग किया है क्या? नहीं वो पहले तो उसको पीछे रशिया के लगा दिया, उसके पीछे रशिया आया तो उसको कुछ करने भी तो मुझे सिर्फ ये जो हाँ रिटेल से निकाल लो पैसा और सो कुड बी ए डिलिबरेट, क्योंकि अब सस्ता हो गया ना सारा कुछ, और जिनके पास मैंने किया हुआ है और मैं इसको छोड़ूंगा। मुझे चाहिए कितने $500 निकालने की कोशिश है जिस हिसाब से मार्केट चल रही है। अब मैंने हिसाब लगाया यार कि $4 का है एक, और अगर 100 पॉइंट यहाँ से चली गई 800 से 900 पे, तो मेरा 400 आ जाएगा, मेरा आज पर डिया का टारगेट हो जाएगा। तो ये मैंने गेम प्लान छोड़ा है पर डिया का। कर छोड़ दिया है भाई, अभी प्रॉफिट में है $20-22, कोई ज्यादा तो नहीं। MNQ सर, MNQ 18,000 से कर रखा था 70,000 19,800 से। पागल दिमाग खराब है। ओह असल में वो मार्केट इतनी तेज मूव हो रही है कि अभी 19 से कल तक हम 20 पढ़ रहे थे, फिर 19 पढ़ने शुरू हुए, आज 17 पढ़ा है यार, 17 हाँ 18 डेढ़ माह 5,000 गई थी। देखें आपका सारा कुछ ऊपर चला गया, ये जैसा ही इसने टैरिफ बोलना शुरू किया ना, तो वो वहां से जरा थोड़ा काम
मेरे तो नंबर ही चार्ट्स पे गलत दिखा रहा है, कंप्लीटली इतना फर्क ज्यादा आ रहा चार्ट मैच नहीं करते हुए आज पे ये था चार्ट गड़बड़ हो गया नंबर मार है। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। एसएम चार्ट दिखा रहे हैं 5170 और दो में है 5186 बड़ा फर्क आ रहा है। ओ भाई मेरी टाइम पे आया तो स्पीड कर जा। 786 783 क्या आ गया वापस अब गई तो ये शायद नीचे तोड़ सकती है यहाँ से। At what point my account will get liquidated? ठीक है जी। जाए बेशक सर, जाने दें अभी। 600 से अगर उधर बाय करना है बड़ा। मैं होनी तो बाय करता हूं। अच्छा थोड़ा जा, अच्छा ठीक है। जी सर। मैंने यहाँ से बाय मार्केट किया था, ऑर्डर इधर लगा, ये क्या है, लैग है या क्या? नहीं बहुत बड़ा लैग है, ये प्राइस तो है नहीं। आपने एफ 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 दबाना है, आप तो बहुत पीछे देख रहे हैं। ये प्राइस चल रही है इस वक्त 781। हाँ, मगर अभी मैंने अभी बाय मार्केट दबाया अच्छा था, एक ऑर्डर सेकंड, यहाँ पर लगा। हाँ क्योंकि 757 पे उसने बाय दबाया है। तो एक तो सेकंड, एक मैं आपके सिर्फ देख लूँ कि आपके अकाउंट कौन से कनेक्टेड है। यहाँ से लगाया था। अब खाली लेजेंड में डिस्कनेक्ट करके दोबारा दें। क्योंकि आपने मार्केट दबाई है, तो मार्केट में उसने जो भी प्राइस मार्केट से आई है ना वो आपको दे दिया उसने। लेट्स सी। वो 100 पॉइंट का डिफरेंस कैसे? नहीं ये चार्ट्स का फर्क चल रहा है। ओके, तो अभी भी लगा ना, तो हाँ। इधर लगा प्राइस तो। लेकिन आपने लॉन्ग किया है ना, तो उसने अच्छा 77 ये प्राइस नहीं है जो। अब निंजा को जरा रीस्टार्ट करें, ये एक दफा रीस्टार्ट कीजिएगा तो देखते हैं अभी प्राइस हो गया। लॉस आपका हो गया कवर। अच्छा ठीक है। जैसे मैं नैस्डैक में घुस जाए 1 मिनट में अकाउंट चला जाएगा पूरा का पूरा, और साथ आपके एक्स्ट्रा भी ले जाएगा कुछ जेब में पड़े हो। ये दो एमएन क्यों महंगे लग रहे हैं अभी?
कोई ना। No problem. 6 से पहले नहीं आप 4:45 से पहले समझो। मैं तो काफी ट्राई की थी फिर बोली हमसे